Like, subscribe, and get notified. The situation at gate number 3 of Salolam Dam had become miserable. The lack of essential infrastructure has led for an unsafe and unenjoyable experience for visitors. Vehicles are parked haphazardly due to the unsuitable parking area riddled with holes and stones. The absence of dustbins has resulted in littering, with no garbage collection mechanism in place. Visitors and security staff struggle with the lack of toilets nearby, as the only available facilities are far away in the botanical garden. These issues pose serious risks, especially after dark, deterring tourists and affecting the reputation of the site as a family-friendly destination. गोवा हे एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा आणि गोयच्या टुरिजमा खातीर गोयचो सरकार जो आसा कितलेशेच पयशे खर्च करता. आता जे जाग्यार हांव उबो आसा हें आसा साळावली धरणाची गेट नंबर 3 आणि तुम्ही तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात. ही तेजी पार्किंग एरिया आसा आणि सगळे कडेन सगळो कचरो पडलेलो आसा आणि अशेंच हांगा जे एरिया आसा हे पळोवंक शकतात. ह्या गाडी वयता ती कोणा लागता तिका फातर हे पळयात तशीच ते हांगा पार्क केली ती गाडी कारण फातर आसा व्हडले व्हडले हांगा पार्किंग स्पेस ना. हांगा प्रॉपर पार्किंग स्पेसाची गरज आसा पूण ती अजुनूय हांगा दिश्टी पडना. आता भितर वचपा खातीर 60 रुपया चार्ज करता फॉरेस्ट. आता प्रश्न पडटा की हे जे पयशे आसात इतले पयशे जे टुरिस्ट भरपूर टुरिस्ट येता प्रत्येक स्टेटीच्यान हांगा टुरिस्ट येता ते पयशे वयतात खंय. आता समज पळोवपाक गेले जाल्यार आतां इतलो कचरो आसा. आता हे कचरो घालपा खातीर हांगा एक डस्टबीन सुद्दां दिश्टी पडना. आता पळयात इतलो कचरो आसा हो सगळो पयलींचो कचरो तसोच हांगा पडोवन आसा. कोणें अजून हांगा कचरो काडलोच ना. हांगा कचरो काडपी बी कोण ना. आणि तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगा टॉयलेटीची बी गरज आसा. टॉयलेट तर हांगा नात. आता टॉयलेट हांगच्यान एक किलोमिटर पासून म्हणपाक जाता. एक बॉटॅनिकल गार्डन आसा थंय आसा. आता जी सेक्युरिटी गार्ड बायलो आसा तांकां सुद्दां थंय वचपाक पडटा कारण मजबुरी आसा. आणि हांगाय जे लोक येतात तांकां हे कितें करतात लोक की हांगा झाडांनी वयतात आणि सगळं पळयात अशी परिस्थिती आसा. आणि आता 6:30 जाल्ले आसात अजुनूय लोक हांगा आसात पूण पळयात एक लायट तुमकां हांगा दिश्टी पडपाना पेटलेली. आणि रस्त्यार झाडां वाडलेली आसात. रस्त्यांनी खांबे आसात पूण तेंचे जे ट्यूबलायटी आसात त्यो गायब जाल्ले आसात. ट्यूबलायटी पडलेल्यो आसात आणि हे रस्त्यार एक सुद्दां लायट ना. समज कोणी गाडी मोडून उरली जाल्यार थंय तरी जनावरां जी आसा रान जाल्ले कारणान जनावरांचे अटॅक जावपाची शक्यता आसा. सो सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. WRD जावं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं हांगा जी बेजीक फॅसिलिटी आसा टुरिस्टां खातीर ती हांगा दिवपाची गरज आसा. आणि खंय तरी जे आमचे हे अशी परिस्थितीक लागून गोंयचें नांव पेड्यार जाता ते खंय तरी राखपाची गरज आसा. असली बेजीक फॅसिलिटी हांगा प्रोवायड करून. क्या है इतना सुंदर नेचर का बीच में है बट इधर पार्किंग थोड़ा लाइक अलग तरीका है. लाइक इट्स नॉट एन प्रॉपर पार्किंग एरिया. गाड़ी डैमेज होने का चांसेस है. एंड वो उसका ये बड़ा बात क्या है लाइक वो टूरिस्ट आता है ना वो सब इधर गंदा करके जाता है. उधर 12 बॉटल्स प्लास्टिक वो ऐसे ही छोड़ के आता है. एंड एटलीस्ट थोड़ा वो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए टूरिस्ट को. वो लिटरिंग का लाइक मामला में थोड़ा इंटरेस्ट लाइक इंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए. एंड पार्किंग को भी वो इंडिकेशंस कुछ नहीं है. एंड क्या रूल्स फॉलो करना इधर वो नहीं करता है. एंड उधर थोड़ा लाइक डिपार्टमेंट उसका ज्ञान रखना है. टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है उसके. वो नीचे है बोल के बोलता है. वो टॉयलेट पूछा तो क्या होता है वो नीचे जाओ बोलता है. वो क्या होता है टॉयलेट वो नीचे बहुत नीचे जाना है गार्डन को ऊपर जाके उधर टॉयलेट करने का. वो तब तक वो किधर आदमी हाल्ट करता है ना उधर टॉयलेट ओपन करना है. बिकॉज इधर ही कर देता है टॉयलेट. वो कोने में सब टॉयलेट का गंदा हो दे जाता है. उसलिए थोड़ा इधर थोड़ा टॉयलेट सेटअप करके कुछ पार्किंग ठीक करना चाहिए. और ये गार्बेज जो निकालते नहीं है बहुत दिन का गार्बेज है. किसी को आपको नहीं लगता कि किसी को रखना चाहिए काम पे? हाँ किसी को रखना चाहिए. वो पैसा तो लाइक 60 रुपीज एंट्री फीस दे आर कलेक्टिंग. किसी को बोलना चाहिए वो डिपार्टमेंट वाला किसी को रख के थोड़ा स्वीपर पर रखना चाहिए. नहीं तो एटलीस्ट दे नीड टू अरेंज सम डस्टबिन इधर. वो डस्टबिन या तो लाइक एटलीस्ट 50% थोड़ा डस्टबिन भी डालता है. वो डस्टबिन ही नहीं है. वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है. उसलिए ये सब हो रहा है. हेराल्ड TV खातीर गौरे सतरकर. Watch on Herald TV.